Hello everyone, welcome to Byte the Code. This is lecture 6 in our Java SC series, and in this lecture, we are going to talk about operators. We are going to see how many types of operators are there in Java, and we'll be discussing them in detail. So let's get started. तो ऑपरेटर्स होते क्या है? हम सब जानते हैं, हम सब ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, लाइक addition का symbol, then we have minus, then we have multiplication, right? Then we have division, right? These are all what? These are the operators, isn't it? Now, ये operators करते क्या है? हम सबको पता है, कोई दो इंटीजर्स होंगे, नंबर्स होंगे, अगर ये ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज एडिशन का ऑपरेटर, तो दो नंबर्स का सम हमें मिल जाएगा. If we use this, we'll get subtraction. So basically, operators are like the symbols that when operate on some operands. Operands मतलब जो दो entities जिन्हें हम add करना चाहते हैं. Okay, so those two entities will be known as operands, and the operator that is performing the operation with those two entities, those two operands, will be known as operator. So operator means a symbol, an entity that acts on two operands, okay, and then perform some like operation, whatever basic operation it carries, it will perform that, right? ऐसा नहीं है कि दो ही operands होंगे, कभी कभी वन भी हो सकता है. इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, राइट? लेट्स मूव फर्दर. तो पहली जो टाइप ऑपरेटर्स की हमारे पास आती है, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, सो क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? These are like used to perform basic mathematical operations, like I have discussed with you, addition, subtraction, multiplication and division. ये टेबल यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें एडिशन ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड दिस ऑपरेटर is modulus operator. Those who don't know what this operator does, it's like जब आप कोई दो नंबर्स को, फॉर एग्जांपल आई से 5 modulus, I'll say 2. ओके, जब हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं, then we are not going to get 2 here. That is, when we if we divide two numbers, then we'll be getting 2. But जब हम मॉडुलस का यूज कर लेते हैं, then we are not going to get the quotient, but we will get remainder. Okay, so in this particular case, when we divide 5 by 2, we'll be getting a remainder as 1, right? So मॉडुलस ऑपरेटर का अगर हम यूज करेंगे, so it will always give us the remainder. ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. देन वी विल कम टू दैट लेटर. ओके, आई होप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिक ऑपरेशंस है, वी ऑल नो अबाउट them. So let's move ahead. So the next in the list is relational operators. Relational operators are used to compare two values. तो किन्हीं दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. The result of all the relational operations is either true or false, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हो. The first operator is double equals to. Can you see this? जावा में हम डबल इक्वल टू वाले ऑपरेटर को कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर. इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है, ये इक्वालिटी चेक करता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड वाला ऑपरेंड. So like it will check if left hand side value is equal to the right hand side value. Okay, then we have less than operator. Of course, we all know it will check if left hand operator is less than the right hand operator, right? Then we have greater than symbol. It will check left hand operand is greater than the right hand operand. Then the next is less than or equals to. It will check if the left hand operand is less than or equal to the right hand operand. Okay,
And same for this greater than and equals to, greater than or equals to, and then for this not equals to. This one will check if the left hand side operand is not is equals to the right side operand. Okay, let's see a fragment of code. We have a number one integer here which is holding the value as 10. Then we have number two integer which is holding the value as 5. जब हमने इन दो ऑपरेंड्स पे ग्रेटर देन का रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया, what we are getting the value as output is true. Why? Because number one, num1 is greater than num2 variable, right? The value held by the num1 variable is greater than the value held by the num2 variable, right? That's why the output is true. So the next operator is logical operators. Logical operators are used to combine two or more relational expressions or to negate the result of a relational expression. लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किन्हीं ऑपरेंड्स पे वर्क ना करके एक्सप्रेशंस पे वर्क करते हैं। तो एक्सप्रेशंस पे वर्क करते करने का मेरा क्या मतलब है, इसे आगे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स दैट वी हैव इन जावा। फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से है। दो एम्परसेंड साइन से हम एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दीज आर द टू पाइपलाइन सिंबल्स, इनसे हम और ऑपरेटर को सिंबलाइज करते हैं। एंड दिस इज अ नॉट ऑपरेटर, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एंड ऑपरेटर जब दो एक्सप्रेशंस पे वर्क करेगा, रिजल्ट विल ओनली बी ट्रू व्हेन if both the expressions are true, otherwise it will evaluate to false. Okay, or operator will result in true if any one of the expressions is true, otherwise it will be false. Okay, and not will result in false if the expression is true and vice versa. तो अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। Assume A and B be two relational expressions. The below tables show the result for various logical operators based on the value of expressions A and B. Okay. So for example, A expression evaluate hui with a value as true, and B expression is also true here. Now अगर A and B करेंगे, यानी कि A और B पे हमने and ऑपरेटर का यूज किया, तो जो हमारे पास रिजल्ट हमें मिलेगा दैट विल बी ट्रू। व्हाई? बिकॉज रिजल्ट विल बी ट्रू ओनली इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू। सो इन दिस केस, फॉर द फर्स्ट केस, it is both the expressions are true, so we are getting true. In all the other cases, because even if one expression is false, we are going to end up with the value as false in case of and operator. But whereas in case of or operator, उसमें क्या होगा? We are going to get the value as true if any one of the expressions is true, right? So यहाँ पे फर्स्ट केस में दोनों ही ट्रू हैं। क्राइटेरिया क्या था ट्रू वैल्यू इवेल्युएट होने का? दैट ओनली एनी वन कैन बी ट्रू एंड द रिजल्ट विल बी ट्रू। So here both the true, so obviously result will be true, right? Here one expression is true no matter if the other is false, but we are going to get the value as true. Here also one of the expressions is true, so we are getting the value as true. Only when both the values are false, we are getting false in case of OR operator, right? Now, what about the NOT operator? As I have told you, ये उसका उल्टा कर देगा, opposite. अगर A expression, कोई भी expression हमारी true है, so the value that we will get after applying the NOT operator, we'll be getting false. And if the expression's result is false, expressions value is false, we are going to get true here. So मतलब inverse कर देगा values का. Okay, let's see a code here. Suppose number 1 is 100, number 2 is 20, and number 3 is 30. Okay, जब हम logical operators इन दो expressions पे apply करेंगे, what we are going to get? Let's see. So number 1 is having the value as 100. Is 100 greater than number 2, which is 20? 100 greater than 20?
Yes, 100 is greater than 20. True. This first expression evaluates to true. And number 1, which is 100, is greater than number 3. Is it true? Yes, it is true. 100 is greater than 30. So true and true, what we are going to get? True and true, we are going to get the value as true, right? Output will be true. I hope this is clear. Let's move forward. Okay, so the next is ternary operator. So ternary operator is used as a single line replacement for if then else statements and acts upon three operands. तो आई नो अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात नहीं की है but just try to understand this. I'll explain it to you when we will be actually discussing about conditional statements. तो इस टॉपिक को वहाँ पे अच्छे से समझेंगे. अभी बस आप इसका सिंटेक्स देख लीजिए. तो फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास इस कोड को देखिए. हमारे पास नंबर वन वेरिएबल है जिसमें वी आर होल्डिंग अ वैल्यू एज 10. Then we have a number two variable which is holding a value as 5. Now we want to check uh, which of the number is the minimum one. Okay, so we want to check if number one is the minimum number, like the smaller number than the number two. Okay, we just want to check this. So what we are doing here, we have used these parentheses. Okay, and in these parentheses we are writing our expression. Okay, and which is what? Number one less than number two. Then we have this question mark symbol. This question mark symbol is actually if statement. So when compiler will read this expression, which is inside these parentheses, it will say if replace this question mark with if number one is less than number two, then return this number one, assign the number one value to this minimum variable, or this colon symbol is or. If this expression is false, then you have to assign this number two value in this minimum. So if number one is smaller than the number two, okay, if number one is smaller than the number two, then you have to assign number one, or if this expression is false, then you have to assign number two to this minimum variable. Now, when we try to output this minimum variable, we'll be getting value as 5. Why 5? Because we can see expression is evaluated to false, because number 1 is holding value 10, number 2 is having the value as 5, 10 is not less than 5, it is false, so we are returning this number 2. Got it? अगर अभी समझ में नहीं भी आया, it's all right. जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, तब हम टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करेंगे. एंड दिस एक्चुअली इज गुड बिकॉज ये आपके कोड को काफी सिंप्लीफाई कर देता और मच कंसाइज कर देता, राइट? We'll see how. Okay, let's move forward. Okay, so next operators are assignment operators. So assignment operator is used to assign the value on the right hand side to the variable on the left hand side of the operator. So there are various assignment operators, and in the below table you can see what are they. So ये जो first operator है, which is a single equals to sign, मैथमेटिक्स में equals to हम यूज करते हैं to show the equality, right? We say left hand side value is equals to the right hand side value, but प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता. यहाँ पे सिंगल equals to का मतलब है that we are assigning right hand side value to some variable, to some to some variable in which is present on the left hand side. Okay, usually it will be a variable, and we'll be assigning a right hand side value to this variable. Okay, and ये जो नीचे आप बाकी ऑपरेटर्स देख रहे हो, these are also assignment operators. Let's see how they work. तो इस कोड फ्रेगमेंट को देखिए. So let's suppose we have a variable to which we are assigning, see this assignment operator carefully, we are assigning a value of 10 to this variable, right? By using this assignment operator. So the value 10 is assigned to number 1. Okay.
Now, if you output this, you will be getting the value as 10. Now, what is happening here? Number 1 plus is equals 5. This is similar if we write it like this. Number 1 is equals, what we want to do, we want to add 5 to the already present value inside this num1 variable. So num1 is holding the value as 10. We want to do 10 plus 5. So we are writing this expression in a much concise and shorter way, and this is like this. So what we are doing, we are just writing this num1 variable, and without typing this num1 variable again, if you put this plus operator onto this left hand side before this assignment operator, it is equivalent to this thing here, num1 plus 5, right? I hope you understand this. And this is how this expression will add 5 to the existing value of num1 variable, which is going to be 15. So when we output num1 now, after adding 5 to the existing value, we'll be getting a value as 15. And the same is happening with the other operations as well, in subtraction, multiplication, and division as well. Okay, I hope this is clear from this example here. Okay, so next are unary operators. Unary operators act upon only one operand and perform operations such as increment, decrement, negating an expression, or inverting a Boolean value. So unary operators बाकी operators की तरह दो operands पे ना लग के बल्कि एक ही operand पे work करता है. ओके, तो operators कौन कौन से हमारे पास unary operators? We have this post increment operator. Okay, we use double addition symbols to represent post increment. So increments the value after use. Okay, we'll see what is the meaning of this. So we have pre increment as well. If you like, अगर आप किसी वेरिएबल के बाद में इस ऑपरेटर को यूज करोगे, देन इट विल बिकम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर. अगर आप किसी वैल्यू के पहले यूज करोगे, देन इट विल बिकम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ओके, नाउ सेम इज विद द पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एज वेल. ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 ऐड करेगा हमारी पर्टिकुलर वैल्यू में. ओके, एंड पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 वैल्यू 1 इंटीजर को माइनस कर देगा हमारी करंट वैल्यू में से. ओके, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, ये टाइल सिंबल कहते हैं ऐसे, तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज यूज टू फ्लिप ईच bit of a value. Okay, like for example we have a number 010011, then आप each bit पे इस bitwise complement को use करके उस bit की value को change कर सकते हो. So 0 will become 1 if something is 1, if some bit is 1, you can apply this bitwise complement and it will become 0. Okay, and this logical negation, if you apply it to some value, it will invert the whole value. So if something is true, it will become false. If something is false, it will become true. Okay, let's see an example. So suppose we have two variables. Number one is holding a value 10. Number two is holding the value as 5. Now we have another variable here, which is of type Boolean and having the value as true. जब हम number one को post increment के साथ आउटपुट करने की कोशिश करेंगे and then प्री इंक्रीमेंट करवा के सेम नंबर को आउटपुट करेंगे, so what do you think we'll be getting the value as? So we'll be getting 10 for this post increment, and then we'll be getting this 12 for pre increment. Now you will say, अभी अभी हमने डिस्कस किया and you said that post increment या pre increment इसका मतलब होता है to add the value to whatever the value our variable is having, right? So currently it is having 10. After adding a 1 to our current value, it should display the value as 11, but it is showing 10. Why is that? That is because of post increment operator. तो हमेशा याद रखिए
जब भी आप पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो तो सबसे पहले वो वैल्यू वैल्यू को यूज करेगा। वैल्यू यूज करने के बाद वो उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, राइट। सो यहाँ पे यूज क्या करना है हमें? इंक्रीमेंट करने से पहले हमें वैल्यूज को डिस्प्ले करना है, बिकॉज वी आर राइटिंग दिस num1 वेरिएबल इनसाइड अवर println फंक्शन, राइट। सो सबसे पहले वो num1 की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा विच इज 10, देन num1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 which will be 11 internally. Now this num1 is holding the value not 10 but 11 because of this post increment operator. And then when we again do this pre increment operator, तो अब यहाँ पर वैल्यू यूज नहीं होगी, सबसे पहले इंक्रीमेंट होगी बिकॉज वी हैव यूज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो पोस्ट मतलब पहले वैल्यू यूज कर लो फिर इंक्रीमेंट करो, प्री मतलब पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करो देन यूज करो। ओके, सो प्रीवियस वैल्यू 11 हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो अब इंक्रीमेंट प्री फिक्स इंक्रीमेंट करने के बाद वी विल बी हैविंग अ वैल्यू एज 12, right? I hope this is clear. Now same is with this postfix decrement operator, prefix decrement operator. I hope you can understand this now. You can evaluate this by your own. Okay. And in the seventh statement, can you see here? We have this logical negation symbol. So is true is holding a value as true, Boolean value true. So when we are using this logical negation, it will output the value as false as as it is showing here. तो यहाँ पे लॉजिकल बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट यूज करने पे हमें वैल्यू -13 मिल रही है। वाई? बिकॉज इट हैज चेंज द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ दिस वेरिएबल, वट एवर दिस वेरिएबल इज होल्डिंग द वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू 10 थी, इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट अगर आप चेंज कर दोगे, इफ इट इज 0, ओके, इट विल बी 0। जब आप उसे 1 चेंज कर दोगे, सो इट विल बिकम अ नेगेटिव नंबर एंड द होल नंबर विल गेट चेंज्ड। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो आज हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। बेसिकली मैंने सारे ऑपरेटर्स कवर कर दिए हैं। ओनली वन ऑपरेटर इज लेफ्ट विच इज बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स को हम फिर किसी सेकंड वीडियो में इसके पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। So today we have discussed about logical operators, arithmetic operators, unary operators. We have seen ternary operator, like we have assignment operators we have seen, and the only thing which is left is bitwise operators. So okay, let's keep this till here. Thank you so much for being in this video. Okay, so we'll be meeting in the next lecture. Till then, take care. अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद।